और इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ मिलने एक मलावियन लड़की से। बाइक या फिर टैक्सी बुक करने के लिए मलावी में कोई ऑनलाइन ऐप है नहीं। So someone is cooking Nsima today. Yeah. For the first time since he was born. Yeah. हाय व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं हूँ ट्रैवल रिपोर्टर और लेके आ रहा हूँ आपके लिए सबसे मज़ेदार ट्रैवलिंग वीडियोस अराउंड द वर्ल्ड। अभी मैं मलावी में हूँ और ये मलावी सीरीज़ का 4th वीडियो है। और इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ मिलने एक मलावियन लड़की से। लेट्स गो। अभी थोड़ा रास्ते पे बाइक के लिए रुका हूँ। यहाँ पे होटल के बाहर बाइक थोड़ी मुश्किल से मिलती है। एक तो मुझे आगे वहाँ तक जाना पड़ता है, मेन सेंटर तक, मेन जंक्शन तक। फिर यहाँ से कोई बाइक आ गई तो अच्छी है। बाइक या फिर टैक्सी बुक करने के लिए मलावी में कोई ऑनलाइन ऐप है नहीं, सो आपको रुकना ही पड़ेगा। या फिर अभी हमने क्या किया, एक साइकिल वाला वो जा रहा है ना, वहाँ पे एक आगे एक साइकिल वाला जा रहा है। उसे बोल दिया कि भाई तू आगे जा ही रहा है ना, तो वहाँ पे जाके आगे उस बाइक वाले को बोलना यहाँ पे आ जाए। Yeah, the person is with me. Can you just tell him about the place? Hello. Remember? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. उसने मुझे उसके घर पे इनवाइट किया है और बहुत बढ़िया सा लोकेशन। देखो पीछे एक गेट है, सिक्योरिटी गेट, और उसके अंदर ये सारे घर हैं। सब अपने अपने घर है, कार की पार्किंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल घर दिख रहे हैं सब। उसने मुझे बोला है कि यहीं कहीं पे लेफ्ट साइड में आना। ओके, वो वहाँ से पीछे से हाई कर रही है। ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और तो मैं आ चुका हूँ उसके घर पे। उसका नाम चेरी है, चेरी। she's here. Hey, hello Cherry, how are you? Sandeep, welcome home. Thank you so much. We'll see her home, let's go. Wow Cherry, beautiful. Thank you. Really nice apartment, really beautiful. हेलो गाइस, ट्रैवल रिपोर्टर हियर। तो चेरी ने मुझे बोला था कि एक लोकल फूड जो यहाँ का है, सीमा, वो बनाने वाली है आज के लंच के लिए। और चेरी का कांटेक्ट कैसे हुआ कि मैं काउच सर्फिंग पे जस्ट होस्ट देख रहा था आसपास, और आई जस्ट फाउंड हर इन द फर्स्ट टॉप इन द काउच सर्फिंग। आई जस्ट लाइक मैसेज करता हूँ, पूछता हूँ मिलने आ सकते हैं क्या, क्योंकि एक लोकल को मिलना बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ, ये फ्लोर है जिससे वो लोकल डिश बनती है, सिमू, जो हम थोड़ी देर में बनाएंगे। ऑलराइट, नाइस। तो अभी चेरी के साथ जो बाहर हमने शिमू देखा था वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। मक्के का आटा है ये, मक्के का आटा। Kata. आटा
Make atta. मक्के का आटा. Make ka atta. Yes. That's what. मक्के का आटा. Atta means flour. Yeah. Make ka. Makka. Makka means maize. And makke ka atta means the flour of the maize flour. Yeah. So you're going to boil. This one. Hmm. So what happens is we put the hot water Mm-hmm. in the. Okay, you put the hot water. You can either use the kettle, or you can either Just boil the water. just boil. No, not boiling. It should be hot, but that hot shouldn't be too much hot, so that when you're putting the flour, you shouldn't do the boils. Okay. Yeah. Okay. All right. Let's So go. this one, I will put the hot water. I'll put the flour. Mm-hmm. I'm waiting for it to start like to make porridge. It should be like a porridge. Yeah. ओके ओके. तो चेरी ने क्या किया यहाँ पे, ये जो नॉर्मल जो पानी का बॉयलर होता है ना, यहाँ पे इसमें पानी बॉयल किया और फिर फ्लोर उसमें डाल दिया. एंड नाउ शी इज लाइक स्टीयरिंग इट ताकि वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाए. राइट? इट शुड बिकम स्टिफ और जस्ट मिक्स You इट know why वेल. I'm stirring? व्हाई? I'm stirring because if I leave it like this, it's going to start Sticking to the. to the bottom of To the the pot. pan. So it's Okay. gonna be a problem. Okay, yeah. Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. I just wanted to ask one thing. What is the cost of a local food outside? Like shimu with some whatever we can get outside. How much will that cost? With vegetables, Yeah. you can get between 800 to 1,000. 800 to 1000. So 800 to 1,000 or huh, too extreme, you can get it to 1,500. 1500. That's very extreme. But it's 1,000. 8 to 1,000. Okay. तो लोकल फूड जो स्ट्रीट पे है वो 800 से 1000 के बीच में है. सो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बजट बनाया था, इट वाज लाइक रियली गुड. इवन आई बजटेड दिस इन लास्ट वीडियो that for afternoon lunch, if you're going as a low budget traveler to Malawi, just keep 1500 for your lunch. That will be fine. It's ready? Yeah, so I take this and put in there. More. I was supposed to be doing this while this is here. But I take off the fire because I don't want it to spoil the thing. So I will do it here. So someone is cooking in Nsima today. Yeah. For the first time since he was born. Yeah, for sure. Hey, Nsima. 100 kwacha. I can open a business here for Nsima. Yeah, the more I'm doing this, it is getting tougher. You see? Yeah. And now it's also getting softer. Yes. Yeah? It's like exercise maybe. What kind of exercise is that? Yeah, It's like my shoulders, my arms, all are working on it. Look at him. He's like home. You don't have a... Nsima guy. Yeah, that's done. Now, It's done? we need to leave it for a while. Yeah. Out of the stove? Yeah. Super. Oh, wow. So यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है. Beans. And then what is that one? This is cassava, potato leaves. Potato? Potato leaves. Potato leaves. Yes. Wow. Interesting. ये नीचे ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये है सीमा. Yes. And then
अपने यहाँ पे जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन उसकी सब्जी है, और फिर पोटैटो के लीव्स की सब्जी, मतलब पोटैटो के पत्ते की सब्जी। इंटरेस्टिंग, मैंने कभी खाई नहीं पोटैटो के पत्ते की सब्जी। थैंक यू शेरी। ऑलराइट, टाइम हो चुका है शेरी के साथ लंच करने का। द लोकल फूड ऑफ lunch. Malawi. What time is it? इंटरेस्टिंग। चलो अभी बज रहे सुबह के 6:30 एंड चेरी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर होम, having Thanks a for lunch. coming. Thank you so Looking much. forward for next visit. Okay, thank you so much. Chalo, it's time to go from Cherry's beautiful home in Malawi. Just push it. Wow. Very nice place. Thank you. Right, so thank you for watching, guys. Thank you for watching this amazing video. I hope you know now कि Malawi के लोग कितने अच्छे हैं. They're really beautiful, warm-hearted people. So please visit Malawi and make sure you have that budget planned. Okay, that is really important. So thank you for watching. Bye bye. God bless you all.